Hello everyone. So today we are going to discuss about the heart sounds. So first of all, heart sounds, how are they produced? So heart sounds are produced by some mechanical activities that are occurring in the heart during each cardiac cycle. So whenever there is cardiac cycle, during each cardiac cycle there are some heart sounds that are produced. Now what are these heart sounds? And so as I said, heart sounds are produced due to the mechanical activities of heart. So what are these activities? So heart sounds are produced by flow of blood through the cardiac chambers. This is one of the reasons that heart sounds are produced. जब भी ब्लड का फ्लो होता है कोई भी कार्डियक चेम्बर में, हमारे जितने भी हार्ट के चेम्बर्स है उसमें ब्लड का फ्लो होता है, तब हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जब कार्डियक मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सम ऑफ द वाल्व्स ऑफ द हार्ट, क्लोजर ऑफ वाल्व्स ऑफ द हार्ट के टाइम पे भी हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस इज हाउ द हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस. नाउ हाउ डू यू हियर दिस हार्ट साउंड्स? तो उसको सुन सकते हैं हार्ट साउंड्स को विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, विच इज़ वेरी कॉमन. ओके, नाउ दिस साउंड्स आर so how are these sounds recorded? So they are recorded graphically. So they are recorded graphically as well. So this is all about the introduction of the heart sounds. Now we will be dealing with each kind of heart sound. For convenience, I'll be drawing a chart with all the 4 heart sounds, which would be easier for you to remember. So there are, as I said, there are 4 heart sounds that occur. In each cardiac cycle, so that is first, second, third and fourth. They are named as such: first heart sound, second heart sound, third heart sound and fourth heart sound. So now let's move and discuss on the heart sounds and make the table of the heart sound. So now heart sounds. So as I said, there are 4 types of heart sounds: first, second, third and fourth. We'll be writing it in the form of table for easy understanding and for grasping easily. So ये कब occur होते हैं? So जो first heart sound है, that occurs when there is isometric contraction period. So whenever there is isometric contraction period and ejection period, थोड़ा part of ejection period, थोड़ा सा part of ejection period. So that's why I'm writing part here. So this is produced during isometric contraction and part of ejection period. ये आपको देखना है कि ये क्या है, तो go and look at the video of cardiac cycle and you will know what is this phase. Then the second heart sound occurs during the prodiastole. ये सारे phases मैंने discuss किए हैं डिटेल में in the videos of cardiac cycle. And part of isometric contraction. So whenever ये प्रोडायस्टोल या फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तब ये सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. थर्ड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज रैपिड फीलिंग फेज. ये सारे phases I have dealt in cardiac cycle and I'm not going to repeat it in this video. If you want to learn this, go and watch the cardiac cycle videos. There are 2 parts only and it will hardly take 10 to 15 minutes. And the fourth heart sound is atrial systole. So whenever there is atrial systole, the fourth heart sound is produced. Now अभी आपको पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं. So the first is isometric contraction और part of ejection period. So ये cardiac cycle का coincision point है, wherever heart sound कहाँ कहाँ होते हैं. तो isometric contraction में first heart sound होता है और थोड़ा part में ejection period में. ये वहाँ पे भी मैंने बोला था, protodiastole में भी मैंने बोला था कि second heart sound यहाँ पे सुनने मिलता है, and some part of isometric contraction as well. And the third heart sound is produced during the rapid feeling phase and fourth during the atrial systole. Now what are the characteristics? हम इसको पहचानेंगे कैसे? Characteristics.
सो दे आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सो जो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड है दैट इज लॉन्ग, सॉफ्ट एंड लो पिच्ड. और इसको हम ऐसे लब करके सुनाई देता है ना जो, दैट इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड. और जो डब करके सुनाई देता है दैट इज़ द सेकेंड हार्ट साउंड. सो रिमेंबर दिस लब एंड डब. सो लब इज़ द फर्स्ट एंड डब इज़ द सेकेंड हार्ट साउंड. सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच्ड. ये फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपोजिट हैं एक दूसरे से. ये लॉन्ग है तो ये शॉर्ट है, ये सॉफ्ट है तो ये शार्प है, ये लो पिच्ड है तो ये हाई पिच्ड है. This is the first heart sound is lub and the second heart sound is dub. Now this third heart sound is again low pitched. That is the characteristic. And fourth heart sound is not audible. You cannot hear the fourth heart sound. Inaudible sound. So these are the characteristics of the heart sounds. Now moving on to the cause. कब होते हैं ये तो हमने देख लिया, पर क्यों होते हैं? What is the cause? तो जब हमारा जो वॉल्व है वो क्लोज होता है, एवी वॉल क्लोजर, एवी वॉल क्लोज हो जाता है तो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड होता है. सेमीलूनर वाल्व्स, सेमीलूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं तो सेकेंड हार्ट साउंड होता है. थर्ड हार्ट साउंड, वेन एवर देर इज रशिंग ऑफ ब्लड, रैपिड फीलिंग फेज में क्या होता है? ब्लड रश करता है. कहाँ पे? वेंट्रिकल्स में. ये सारा चीज़ मैंने कार्डियक साइकिल में कवर किया है. जिसने कार्डियक साइकिल पढ़ा है उसको भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. फोर्थ हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड कब होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर या एट्रियल मसल्स. एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे होता है. तो जब एट्रियल सिस्टोल होता है तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है. किसका? एट्रियल मसल्स का. सो दिस इज ऑल इंटरलिंक्ड. व्हेन इफ यू नो दिस फेज यू विल डेफिनेटली रिलेट. जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है क्या होता है? एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं, ड्यू टू विच द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड. ड्यूरिंग प्रोटोडायस्टोल देयर इज द सेमीलूनर वाल्व दैट क्लोजेस, बिकॉज ऑफ दैट the second heart sound is heard. During the rapid feeling phase there is a lot of blood that is rushing into the ventricle, due to which the third heart sound is produced. And the fourth heart sound is due to the contraction of atrial muscles during the atrial systole. So this is the heart sounds and its cause and occurrence. Now moving on to the relation with ECG. ECG से कैसे relate करता है? Relation with ECG. तो वेन एवर ECG पे भी मैंने वीडियो डाली है तो वो भी आपको अगर देखी है तो ये भी समझ आ जाएगा. तो ECG में क्या होता है? जो आर वेव है उससे कोइंसाइड करता है. इट प्रीसीड्स, द सेकेंड हार्ट साउंड प्रीसीड्स और अपीयर्स 0.09 सेकेंड्स आफ्टर टी वेव. टी वेव के जो पिक्स है 0.09 सेकेंड के बाद अपीयर होता है. और जो थर्ड हार्ट साउंड है दैट इज बिटवीन द टी एंड पी वेव. एंड द फोर्थ हार्ट साउंड इज बिटवीन द पी एंड क्यू वेव. अभी द लास्ट पॉइंट ऑफ द हार्ट साउंड इज number of vibration that you can hear in the phonocardiogram. तो इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड में देर आर 9 to 13 vibrations. सेकेंड हार्ट साउंड देर इज 4 to 6 vibrations. In third heart sound there is 1 to 4 vibrations, and in fourth heart sound there are 1 to 2 vibrations that you can hear in the phonocardiogram. So this is all about the heart sounds. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ. जिसने कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा अभी कि ये साउंड्स कैसे हैं, क्या है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं. दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.